Students, today we are going to discuss the question. Show that pressure time volume means P into V is equal to work. Means now we are going to start the derivations. We have to solve this question for 2 marks. It is generally asked in the board examination. Show that pressure time volume means P into V is equal to work means W. For explanation of this, we are taking the help of the work. What is the definition of work? The energy by which a body is displaced through a distance d by applying a force is called as the work. Work done is positive or negative. This is the two types of work. But work means what? When you are applying the force and body is traveling some distance, then work is said to be done. If there is a wall and you are applying the pressure, there is no movement of the wall, no work is done. But when there is a chair and you are applying a force and chair is moving some distance, then work is said to be done. Clear? So work concept is related with the force applied and the displacement take place. That we are calling as a work. So this is the statement we have taken. It is written in the mathematical form. W is equal to F into D. So this is our important equation number 1. That is according to the definition of the work. What do you mean by work? The energy by which body is displaced through a distance d by applying a force F. That is called as the work. So work is denoted by the symbol W, force is denoted by the symbol F, and displacement is denoted by the symbol D. Therefore, equation becomes W is equal to F into D, equation number 1. After that, if area is considered, it is indicated by symbol capital A. So area is nothing but it is the product of length into breadth. So D and D, it's become D square. But volume is the length into breadth into height. That's why it is D into D into D means D cube. So that is the criteria we are applying for area. A is equal to D square, and for volume V is equal to D cube. Okay. Now we are moving to the definition of the pressure. So pressure is equal to force per unit area. So pressure, when you are considering, it is the product of force upon area. P is equal to F upon A. So P means pressure, F means force divided by A, that is area. P is equal to F upon A, that is called as the pressure. You know that pressure depends upon the area. Area is more, pressure will be less. Area is less, pressure will be more. For example, we are considering the knives, the blades, they are having the very sharp edges because area is less. That's why pressure is more. Okay. So what pressure is directly proportional to the force and inversely proportional to the area. Clear? For that purpose, we have taken the equation P is equal to F upon A. Now our equation for solving this, we are multiplying this equation number 2 by V. So what is our equation? P is equal to F upon A. So P multiplied by V on the left hand side. F upon A is already there. It is multiplied by V. So the terminology, equation number 2 is multiplied by the V on both sides. P into V is equal to F upon A into V. After that, P into V is equal to F upon A. Now we are placing the values of volume and area. Before this, we have seen A is equal to D square and V is equal to D cube. Now, plus putting these values in the equation number 2, P into V is equal to F upon A. A is written as a D square and V is written as a D cube. Okay. After solving this, P into V as it is. So D square cancel, 1D is remaining. Here D cube means D square into D. D square cancel, 1D is remaining. So P into V is equal to F into D. Therefore, this equation become equation number 3. Now P into V is equal to F into D, force into displacement. But
Work done is also defined in different way. The work done is the product of force into displacement. We have seen like in equation number 1, F is equal to W is equal to F into D. So this W is equal to F into D means equation number 3 is having F into D. So this term F into D is now replaced by the W. So our equation 4, W is equal to F into D, it is placed in equation 3. So equation 3 and 4 combinedly result in the formation of P into V is equal to F into D, but F into D is equal to W. Therefore, P into V is equal to W. So it says that pressure multiplied by volume is equal to the work done. We are interested in the derivation that show that pressure time volume is equal to the work. So pressure time volume is equal to the work. स्टूडेंट्स हम आज डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं. डेरिवेशन डिराइव जब किया जाता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट प्रेशर टाइम वॉल्यूम is equal to the work. For explanation of this, we are taking the example of or definition of work. So work यानी क्या होता है? वर्क डन कब होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके बाद फोर्स से उसका कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स अगर ज्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा, तो वर्क क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. फोर्स अगर कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, इसका मतलब वर्क क्या रहेगा? कम रहेगा. बट कंसिडरिंग दिस, इसका कंसिडरेशन लेके हमने इक्वेशन डिराइव किया है W इज इक्वल टू F इंटू डी. जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला हमने उसकी डेफिनेशन से लिया है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. जब वर्क डन होता है उसके पहले हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम डी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो W इज इक्वल टू F इंटू डी. हम जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उस डिस्प्लेस होगा. लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है, जैसे दीवार है, दीवार पे कितना भी फोर्स लगाए तो डिस्प्लेस होंगी क्या? नहीं होंगी अपने हाथ से, तो वर्क डन नहीं होगा. पर अगर चेयर पे अगर हमने फोर्स लगाया तो चेयर डिस्प्लेस होंगी. सो W इज इक्वल टू F इंटू डी. So this is our derivation. Equation number 1, work done is equal to force into displacement. After that, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एरिया जो है, एरिया कैसे किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं? ए से. ए और वॉल्यूम V से. एरिया इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ. जो डिस्टेंस अपन ने कवर किया है D है, D इंटू डी. सो ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर. आफ्टर दैट वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है 3 इसका प्रोडक्ट, लेंथ रहती है, ब्रेथ रहती है और हाइट रहती है. D इंटू डी, इसका मतलब वो क्या हो गया? डी क्यू. क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू दी फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला है. हम लोगों ने प्रेशर देखा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? फोर्स. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? एरिया. प्रेशर अगर तुम ज्यादा लगाओगे, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, फोर्स कम लगाओगे तो प्रेशर कम रहेगा. बराबर? तुमने नाइफ लिया और पनीर पे ऐसे सिंपली रख दिया तो कट होगा क्या? नहीं होगा, तुमको प्रेशर लगाना पड़ेगा. तुम प्रेशर ज्यादा लगाओगे, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, फोर्स कम लगाओगे तो प्रेशर कम रहेगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. एरिया ज्यादा रहा तो प्रेशर कम रहता है, एरिया कम रहा तो प्रेशर ज्यादा रहता है. इसीलिए नाइव्स और ब्लेड रहते हैं, उनके एजेस बहुत ही शार्प रहते हैं. इसका मतलब उनका एरिया क्या रहता है? कम. एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. P इज इक्वल टू F अपॉन A. आफ्टर दैट वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को हम डेरिवेशन के फॉर्म में P इंटू वी, अपना टारगेट क्या है? प्रेशर टाइम वॉल्यूम, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को हम V से मल्टीप्लाई करेंगे. P इंटू वी इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू V. क्लियर?
उसके बाद P इंटू वी, F अपॉन A इंटू वी है. What is the value of A? A is equal to D square. What is value of V? V is equal to D cube. Putting these values in the above equation, P into V, F upon A की जगह हमने क्या लिया है? D square. और V की जगह क्या लिया हमने? D cube. D cube का मतलब क्या है? D into D into D means D square into D. डिनोमीटर में D square है, न्यूमरेटर में D square into D है. D square क्या होंगे? कैंसिल. क्या बचेगा? सिर्फ D. इसका मतलब P into V क्या होगा? F into D. So this is the equation number 3. Pressure type volume is equal to force into displacement. But इसके पहले हमने देखा है work done is the product of force into displacement. Equation number 1 लिया था अपन ने. W is equal to F into D. As W is equal to F into D, so here we can put this value in equation number 3. P into V is equal to force into displacement. So P into V is equal to W, because F into D is equal to W, means you can place P into V is equal to W. Equation number 3 क्या कहता है? P into V, F into D है. But F into D का मतलब क्या है? W. इसका मतलब P into V is equal to W. इसका मतलब क्या हो गया? Pressure time volume is equal to the work. So that is the derivation we have derived. So it is very important derivation which is asked for the 2 marks.